So Karan Aujla, he was like, first of all, one of the nicest people I've ever met. Okay. He was very nice, very humble. Like I was standing in the corner जब वहाँ पे I reached the set and he came to me and he introduced himself. He like just started talking to me like, oh, how are you? What's your name? And you know, I haven't seen a lot of people do that in general. So it was really nice and warm to see like somebody's like with his fame and you know the position, like he's very humble. Humble, हाँ. She's just like the tबीयत मत खराब कर लियो. I hope you get enough rest. You know, like she's not concerned about like what's gonna happen to my face, but she's more concerned about like my inner health and my mental health. Like I hope you get enough sleep. I hope you're not stressing out. तो उसने बोला कि मैं ना कई बार परेशान हो जाता हूँ कि बहुत काम है ना, थकावट हो जाती है. तो कह रही कभी जिंदगी में ये वर्ड मत बोलना क्योंकि उनसे पूछना जिनके पास काम नहीं है. Exactly. तो कह रहा जब तक शरीर चल रहा है काम करो. Exactly. But when it comes to being, because I'm the oldest after my dad, like I have to take care of my family. So उसके बाद I feel like I've grown a lot and I have kind of understood my responsibility. You know, my mom's my responsibility, my sister's my responsibility. My brother can handle himself. He's working. He's fine. I remember 2 years ago I came here and I was sick. रात को आधी रात को. He didn't sleep. He's like नहीं. मेरे को हल्की सी भी खांसी. तो ठीक है. You want anything? मैं ला कर दे दूँ. And you know, so it's just like these छोटी things like you don't want your parents don't have to tell you love you like 20 times a day. Just like these little things show like you know how much they love you. छोटी चीजें. Yeah. अभी करण औजला का गाना है You'll Remember, I'll Remember. 6 months के बाद his new songs will come. Yes. People won't remember those songs. ठीक है, वो तब चले. सिमरन को नहीं याद रखेंगे, करण औजला फिर भी याद रखेंगे. Exactly. तो वो उसी चीज पे है कि with movies the sole focus is on you. Yes. And people will remember you with your name. And for me, because I have a theatre background, again I said like modeling is not that like मेरे लिए. I prefer acting over modeling. You know, I told you like I like Richa Chadda. उसकी like I watched फुकरे तब से मेरे को I really like her a lot and then I watched the Madam Prime Minister. हाँ आई थी. नहीं not that. कुछ CM करके थी and you know her acting in that's really great and she's a vegan so एक ना वो थोड़ा होता है कि you just start respecting that person. Okay she's a vegan, you know she cares about animals. मसान भी अच्छी है उसकी. मसान भी बहुत अच्छी है. Exactly. So hi Simran, how are you? Good, how are you? I'm also good. अच्छा तो सबसे पहले तो congratulations आपको. Thank एक तो करण औजला के सॉन्ग के लिए और दूसरा हुस्तिंदर का जो सॉन्ग है डॉलर वर्गीय. Thank you. है ना, तो ये दोनों की कहानी बताओ मेरे को, कुछ करण औजला के बारे में बताओ. So Karan Aujla, he was like first of all one of the nicest people I've ever met. Okay. He was very nice, very humble. Like I was standing in the corner जब वहाँ पे I reached the set and he came to me and he introduced himself. He like just started talking to me like, oh, how are you? What's your name? And you know, I haven't seen a lot of people do that in general. So it was really nice and warm to see like somebody's like with his fame and you know the position, like he's very humble. हाँ. And with that song, it's like the director of that song, Karan Malli, he's a really good friend of mine. I've known him for 3 years. Okay. So I was at work and he calls me and he's like, Simran, free hai? And I'm like, dude, I'm at work, what's up? And he's like, oh, I need you for a shoot. And you know, he's a friend, like I've done 5-6 music videos with him so far. So I'm like, yeah, sure, no problem. Like, you know, let me know. I didn't ask him too much stuff because I was at work and I'm like, okay, you send me the address, send me the time and I'll be there. I cannot take a day off. So I'll just come after work. And then he's like, okay, yeah, no worries, no rush, itna koi important nahi hai, because he didn't tell me whose song it was. And I'm like, okay, I'm gonna go on my break, straighten my hair, and I'm like, makeup khud kar lo, is there makeup? He's like, no, to khud makeup kar le, it's fine. Achha. And I did my makeup, I brought some casual clothes, he's like, apne aap se rakh le. And I'm on my way there, and I call him, I'm like, acha, you know what, I'm running late, like I was supposed to be there at 5, I'm gonna be there at 5:30, I hope it's okay. He's like, yeah, no worries. I'm like, acha, singer kaun hai? He's like, Karan.
And I'm like, who? And he's like, Karan Aujla. I'm like, weren't you supposed to tell me when you called me? Because I would have taken a day off and I would have been there all day. And he's like, nay, it's fine. Like, you come here whenever you get here, it's fine. Right. So, yeah, my friend Karan Mali, like, very talented guy. He actually referred me. He showed my profile to Karan Aujla. He liked it and then he asked me to come. So, that's how I got the role, and they really appreciated my work, and I'm like so thankful and grateful to be able to perform in front of such people and like you know having them appreciate my work. So it was very nice. Yeah. तो कितना आसान होता है या मुश्किल होता है यहाँ तक पहुँचना? I feel like कि बहुत luck पे and contacts पे depend करता है. I don't have too many contacts in this industry. As I told you, like I basically work with like same 3-4 people over and over again because they have seen my work. They ask me to come whenever there's a music video or a big music video they want me to be a part of. Right. So they keep suggesting me, right? And with me, I feel like because you know everybody has good experience, bad experience, so I kind of have my guard up all the time whenever I'm talking to a new person. Right. So it was nice to see, you know, I was like, nee yaar, like the people I'm putting my trust in, the people who put their trust in me, I know they'll get good shoots and I know they'll refer me, so dekhi jayegi kind of stuff. So it was again like luck and again connection. Yes. So it's very important. मेरे को लगता है luck और connection से भी ज़्यादा अब आपका hard work काम करता है. That's true. I've been working. I told you, right? Even there, I do a full-time job and I only do shoots either like in the evenings or on the weekends. So I cannot do them all day every day. So even with that, with like such strict schedule, like I have to have like I have to let go of so many projects because like वो भी important है, वो भी important है. Yes. So it just goes hand in hand. But yeah, I have worked really hard. Like I remember I have like even before I came to India, for past 3 months I didn't have a single day off. So I worked every day. 24/7 हाँ? 24/7. कितनी देर सोने को मिलता है? Well, वहाँ पे तो I still got enough sleep. I would get like good 6 to 8 hours. But यहाँ पे sleep kind of an issue. यहाँ पे तो थोड़ा सा वैसे भी है ना कि घर पे आ रखे हैं ना, मम्मा है तो सबके साथ बैठे रहो, रात को 12-1 बज गया. Exactly, and that happens. And you know what? I do my office job here according to Canadian hours, and then you know I have to work at night. So तो मम्मा बोलते नहीं कि आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे, हैं? Dark circles आ जाएंगे. She's just like तबीयत मत खराब कर लियो. I hope you get enough rest. You know, like she's not concerned about like what's gonna happen to my face, but she's more concerned about like my inner health and my mental health. Like I hope you get enough sleep. I hope you're not stressing out. So it's very important to have. तो रात को उठ के देखती है मम्मा, है ना? Yeah, like रात को she'll wake up at 2 a.m. like अभी तक उठी हुई है, सो जा, कोई बात नहीं, सो जा. And I'm like I cannot, थोड़ा सा काम पड़ा, मैं finish करके सोऊंगी. सही बात है. तो कितनी मुश्किल होती है टाइम मैनेज करना? I feel like for the 80% of the time it's fine, like I can manage, but sometimes when I do shoots back to back, जैसे दिन में shoots आ जाते हैं, you know, some shoots are like they take 12-14 hours. Like कई बार तो call time मेरे ख्याल से 6 o'clock 5 o'clock in the morning. I did a shoot 2 days ago. The call time was 4:30 in the morning. तो सोए कितने बजे थे? I think सोई थी around 2 o'clock. And then I woke up at 3:50. Okay. And then I had to get ready. I took a shower at 2 a.m. na. I'm like, okay, I got all my stuff ready, so I didn't have to do anything in the morning. But it was hard because I came home and I passed out. I could not even like stay up. It was very exhausting. Right. So it gets hard sometimes, but it's like. But it's मजा आता है ना, मतलब मजा आता है. थ्रिल होता है कि रश होता है बॉडी में, या काम करना है ना, और वो मजा आता रहता है साथ में कि काम हो रहा है. Exactly. It's like a different kind of vibe, है ना? Different kind of vibe, different kind of like happiness when you're working constantly. Yes. It's nice. मेरे को खुद को ना, मैं 24 घंटे कई बार सोता नहीं हूँ, मैं रात को 3-4 बजे तक जाग रहा होता है ना, तो वो समय जो थ्रिल चल रहा होता है ना दिमाग में काम करने का, जो हो रहा होता है कि नहीं अभी उठ के चला जाता हूँ करने ना ये, तो वो चीज. I know. And you know you feel happy like हाँ अभी काम है, like knock on the wood. Yes. You're like thank God I have work. Yes. जब बंदा वेला होता है then that's stressful. मेरे को एक बात याद आई इसी पे, शाहरुख खान ने एक बात बोली थी, तो उसने सरोज खान बैठी थी सामने, तो जो लेजेंड है, जो डांसर थे इतने बड़े,
तो उसने बोला कि मैं ना कई बार परेशान हो जाता हूँ कि बहुत काम है ना, थकावट हो जाती है। तो कह रही कभी जिंदगी में ये वर्ड मत बोलना, क्योंकि उनसे पूछना जिनके पास काम नहीं है। Exactly. तो कह रहा जब तक शरीर चल रहा है हाँ काम करो। Exactly. मैं वही तो बोल रही हूँ कि जब तक शरीर में जान है, you know, you can hustle and like you can just run around and get your stuff done. Right. तब तक करो, जितना 24/7 करना है करो, कोई बात नहीं। पूरी जिंदगी पड़ी रेस्ट करने के लिए। अभी नाम बना लिया, काम कर लिया, जिंदगी बना ली, नहीं तो उसके बाद तो रेस्ट ही रेस्ट है। उसके बाद नहीं तो या तो रेस्ट होगा या तो काम होगा, नहीं तो फिर करते रहो 70 साल की उम्र तक काम रो होगे। यू हैव टू बी फिक्स योर रिटायरमेंट एज कि मुझे 50 में रिटायर होना है 100%। और लेकिन उतना पैसा बैंक में होना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड उसके बाद स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि नहीं यार अच्छा साल भर तो चल जाएगा, आगे का क्या होगा। यस। तो ये चीज़ कब आई माइंड में कि मुझे इस इंडस्ट्री की तरफ जाना है? सो ever since I was a kid, when I remember every time I was a kid, like everybody would ask me, what do you want to be when you grow up? I'm like, I want to be Miss Universe, I want to be Miss World. I didn't know what that was, right? And so I'm short, I'm 5'4", and you know the requirement is like 5'7" or above. And I have tried getting into a lot of pageants, but again, like I got rejected because of my height. And then I'm like, chalo theek hai, modeling line mein itna nahi hoga because height's a big scene. But with acting, it's not that bad. And ever since I was in school, I was always in theatre or drama. Even when I moved to Canada at the university, I was a theatre student, so I did theatre there. And I even went to Vancouver Film School, but join nahi kiya. I took their demo class to see, you know, what they teach for acting and different things. I took ek do or online seminars on, you know, how to be presentable, how to, you know, when you're like going for acting, and what's like the, even for modeling, like what are the basic things you should carry with yourself, like how your posture should be, different things. Like I think it was always there ever since I was a kid. I always had that, and my mom played a huge role too, because she would like dress me up with like Dhoom. I remember Dhoom 2 आई थी or something. I don't know where she got the clothes from. Like she would get like वैसी जैसे ऐश्वर्या राय ने कपड़े डाले थे, she'll get that and she'll like तो ये डाल तो वो डाल, you know. So it was a craze कि starting से oh yeah, you know what, I wanna like go for modeling or acting. तो मम्मा का कोई ड्रीम तो नहीं था ऐसा मॉडलिंग में का? मम्मा का फैशन, she did fashion designing. Okay. Even I wanted to do fashion designing. I got enrolled and then it became very stressful, and I'm like, yeah, I don't think I can do that because I couldn't do 2 weeks. I don't think I can do that for like next 4 years. Like it's just too stressful for me. With modeling and acting, it's been 2-3 years, but I can do it because इतना stressful नहीं है. तो जब ये फैशन डिजाइनिंग जो आपने बताया मम्मा का, हाँ जी, तो मम्मा ने उसको परस्यू किया? I don't think so. No, she had a boutique actually. Okay. तो बुटीक खोला. तो फिर वो तभी शौक आया ना उनको वो कि बेटी को तैयार करना है ना, अच्छे कपड़े और ये सब, वो क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही था. शी ऑलवेज हैड दैट क्रेज कि तैयार रखो बच्चों को, वो छोटे छोटे बालों पे लगाने हैं. एवरीथिंग, लाइक आई डिड एवरीथिंग. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड आई हैड दोस प्लास्टिक वाले सिंड्रेला स्लीपर्स और लाइक द हील्स, एंड आई वुड जस्ट लाइक वॉक अराउंड द हाउस लाइक टक 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 टक, जस्ट लाइक यू नो इट मेड मी सो हैप्पी. लाइक आई एम अ मॉडल, यू नो, आई एम गोना वेयर हील्स, आई एम टॉलर नाउ. पिंक वाली ड्रेस में ना, एग्जैक्टली. तो मजा आता है ना. तो कितनी की यादें जुड़ी हुई हैं अभी भी? देखते हो कोई फोटोग्राफ्स हैं पुरानी? होंगी. कभी देखी? I don't think इतनी फोटोज कभी क्लिक की, but I'm pretty sure होंगी. Like I have so many pictures with most of the pictures. Like as a kid, I think I was a little camera shy. I was like नहीं pictures मत click करो. लेकिन अब नहीं है. नहीं अब नहीं है. अब तो पूरा एकदम. अब तो I love the camera and camera loves me. कैमरा ऑन होते ही. Yeah, कैमरा ऑन होते ही स्माइल आ जाती है. ओके. तो जब यहाँ से कनाडा मूव हुए, कब मूव किया? I moved 2016. ओके. 7 years. 7 years. तो क्या मुश्किल आई, कुछ आई वहाँ पे? पहले कुछ था वहाँ पे, रिश्तेदार या रिलेटिव्स थे? Relatives नहीं थे, but again I told you I went through UFE ना, so I had seniors who were already there, so they received me and you know they helped me to get initially started कि अच्छा, you know, you have to go there, get these government IDs, get your bank account started, and
you know, this is how you live, this is how you take the transit, and they kind of taught me everything to help me get started. And I'm really grateful because I feel like a lot of people don't have that luxury of having somebody there who like goes with you in the bus and teaches you how to do that and shows you this is where this place is, that took me to my university before it even started. Like, this is where the university is, this is where your most of the classes are gonna be, this is where the cafeteria is, this is the library, you can go use your pass and, you know, get printouts, get this and that. Like, it was nice, it was easier for me. And obviously going from Chandigarh, it wasn't much of a cultural shock, because I feel like in Chandigarh you have everything accessible to you. It's a very nice and fast city. Bilkul. So it wasn't like a lot of people I have heard, like they're like, oh, I'm missing my family, I'm missing my, you know, like it's very different. I never felt that. I am not sure if other people from Chandigarh have had a similar experience, but I didn't really feel a difference, honestly. Because एक तो city बहुत अच्छी है ना, एक तो planned है ना, बहुत अच्छी city है, हर चीज़ available है, तो वो हमें ज़्यादा शॉक नहीं लगता. लेकिन जो अगर आप इंटीरियर ऑफ पंजाब में जाओ या हिमाचल में या हरियाणा में जाओ, तो वहाँ से शॉक लगता है हमें जाके, ओ ये कहाँ गए. Exactly, because वो ना, I feel like even if those people come to Chandigarh, for them Chandigarh is even like a very big city. Big city, yes. And a person who has born in, like, I was born here, I grew up here, so for me it was just like कि अच्छा normal है, because I didn't have a pind, I didn't have, my nani house was here, my dadi house was here, so it was like Chandigarh was like where I lived. Vacation के लिए कहाँ जाना है, we'll go to Delhi or we'll go to like Kullu or Mandi, like my mom's hometown. तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आई वहाँ पे, है ना? No. तो वैसे मुश्किल आती है लोगों को? I feel like people get very depressed, they get homesick, they get you know, वो बहुत again, like they get very depressed and anxious with like what are they gonna do, अब कल का कैसे होगा. And you know, I feel like with the language barrier, because like you have to constantly speak English all the time, and तो थोड़ी आती है, because you know a lot of people don't have family or friends there. I had friends there already, so again मेरे लिए difficult नहीं था. People don't have that there, they don't have the luxury of having friends. So it plays a huge role, because people are lonely. Like you cannot spend your whole day in a छोटा सा कमरा. You will go crazy because और अगर काम नहीं है तो और ज़्यादा परेशान. Exactly, काम नहीं है, and it's because again इतने सारे लोग जाते हैं, so competition भी बहुत है. So there's more competition, there's lack of work. And lack of work, like आप वेले बैठे हुए हैं, it's stressful, right? कि आपने अपना, you have to study, you have to work, and you have to, you know, be self-sufficient. Like what is the point कि लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे आ गए future बनाने, but job नहीं है, what are we gonna do? Job नहीं होगी, you won't get the PR, right? PR नहीं होगी, फिर पैसे नहीं होंगे. PR नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे. Exactly, तो वो बहुत एक चीज़ है जो play करती है. In my case, I've been lucky, तो फिर वो चलता रहा ना. Yeah. तो कई बार लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया कनाडा का. क्यों? I just feel like it's so much better, because I as I said, like I didn't want to live here at all. It was like I don't know, I just had this thing ever since I was a kid कि हाँ मैंने बाहर जाना है, period. Like there's no any other option for me. Okay. And so when I went to Canada, it was nice, and you know, like the first 2 years, like when people around me were homesick, and I was like, okay, I don't know if I don't have emotions or what. Like I know I miss my family, but I don't miss them that much that I want to leave everything and go back. So it didn't really, because I think I liked the place so much that I didn't just want it to leave. Whereas other people were like कि नहीं बस हो गया, we want to go back. I didn't have that. So उसमें ऐसा बोलना चाहिए ना कि यार मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी मम्मी और सबको यहीं बुला लूंगा. Exactly. हाँ ना, मतलब कि ऐसा होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि मैं वापस चला जाऊंगा. क्यों जा रहे हो? आए क्यों थे? Exactly. You know, you wasted your years, you wasted money, you wasted इतना time, and it's just like not very convenient. Obviously for like some people who are financially fine, okay, they can afford to, you know, go out and spend 2-3 years, and it's fine, but for some people it's not. So you have to kind of plan your future कि okay, I'm gonna go, I have to work, I have to be able to, you know, afford my bills. कि मैं घर वालों से कितनी देर पैसे मंगवाते रहोगे हर महीने. It's not very nice, or like
कि it doesn't make sense, right? Like अगर वहाँ पे इतना कर दिया, अब कितना करें? Exactly, यहाँ पे रहते तो उसके 1/3 पैसे लगते हैं, and वहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, and you know like and they're stressed too कि अच्छा हमारा बच्चा वहाँ है, बच्चे ने खाना खाया, रहने की जगह नहीं है, like my kid's stressed out, job नहीं है, so it's like मुश्किल है। तो कभी-कभी लगता है कि सिमरन ज़्यादा बड़ी हो गई है एज में, मुझे ऐसा लग रहा है कि you talk like कि वेरी हर चीज पे ना कि नहीं यार ये ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। I feel like it's like past couple years I felt like I have grown a lot. Compared, I feel like I'm still very childish because people around me tell दोनों me फेज हैं। दोनों फेज है, like when it comes to being responsible, I will take responsibility, but most of the time I make decisions from my heart instead of my brain. Like I'm very like कि I feel bad for people, so I'm very gullible. So if you'll tell me something, even if you've like lied to me 6 times in the past, I'll still believe it. I'm like, nahi yaar, maybe he's actually sad. You know what? I don't know. It's just like how I grew up. Just have so much empathy for people, but when it comes to being because I'm the oldest after my dad, like I have to take care of my family. So uske baad I feel like I've grown a lot and I have kind of understood my responsibility. My mom, like my mom's my responsibility, my sister's my responsibility, my brother can handle himself, he's working, he's fine. मुझे तो लग ही रहा है जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि you feel sometimes कि दोनों चीजें होती हैं हमारे अंदर। तो चाइल्डिश कितने हो? Very like I जैसे मैंने बताया पहले I still throw tantrums. जो अगर मेरे को चीज़ चाहिए नहीं मिल रही, like if I'm suppose like अगर मैं अभी बोलूँ कि मुझे अभी छोले भटूरे खाने हैं and my mom's like नहीं तबीयत नहीं ठीक, छोले भटूरे नहीं खाने, I would not eat anything until I get my छोले भटूरे because I'm like नहीं मुझे वो ही खाने हैं। आधी रात को I remember one time I was a child and I'm like कि आधी रात को 2 AM 2:30 AM I didn't eat anything all day because I wanted to eat तंदूरी वाले आलू के परांठे। अच्छा। And हर जगह बंद थी, we didn't have Zomato like 10 years ago, so कहीं से कुछ deliver नहीं हो रहा था, like 2 AM and उसके बाद my mom's like making fresh आटा, making आधी रात को, and then she made something and I'm like इसका ना टेस्ट नहीं अच्छा है। She got so frustrated. थप्पड़ नहीं लगाया उन्होंने? No, I think she threw a चप्पल at me, but I like dodged it because I'm like कि अच्छा नहीं, I'm like नहीं मैं नहीं खाऊंगी, ये अच्छा नहीं बना। अच्छा नहीं खाऊंगा। सुबह उठ के दोबारा सुबह उठ के बाहर से वो जो वहाँ से रेस्टोरेंट से हमने एक बार परांठे मंगवाए थे, मैं वो ही खाने हैं, तंदूरी वाले आलू के परांठे। So yeah. और पापा कितना प्यार करते थे? क्योंकि बेटियां पापा के बहुत ज्यादा। I feel like again like my dad was very much like me. Like I don't know how to show emotion, so he was like me, but he cared so much. I जब my Karan Aujla song came and I was like checking like who all follows him from my account. It was like 100 people, and he was the only celeb that my dad followed. So it was like such a, because I never thought of like I'll ever work with Karan Aujla, right? Like it never crossed my mind. Yes. But it was like a very weird thing. Like I cried for a little bit ki, like that's the only celeb he followed. And it was like a nice thing ki acha, what, he would have been proud. Like even after like log aate the at home and they'd be like, oh yeah, you're the daughter, he was like so proud. He would like कोई भी क्लिनिक पे आ जाता था, oh my daughter is a model, my daughter is an actor, उसकी वीडियोस देखो, उसकी प्रोफाइल देखो, go follow her on Instagram, like एक पर्सनल असिस्टेंट रखा हुआ था, कोई ज़रूरत ही नहीं, like he was doing my publicity, जो भी आए, अच्छा आप क्या हो? My daughter is a model, my daughter is an actress, like I'm so proud of her. So it was like a very, like he was very proud of me and really like cared about his kids in general, कि कुछ भी होता था कि नहीं. I remember 2 years ago I came here and I was sick, रात को आधी रात को, he didn't sleep, he's like नहीं, मेरे को हल्की सी भी खांसी, तो ठीक है, you want anything, मैं लाकर दे दूँ, and so it's just like these छोटी things, like you don't want your parents don't have to tell you love you like 20 times a day, just like these little things show like how much they love you. छोटी चीजें। तो तुम्हें लगता है कभी कि तुम कर पाओगी इतना जितना तुम्हारे पेरेंट्स ने किया? देखी जाएगी। कभी सोचा? सोचा नहीं हो। मुझे लगता है कि जो जैसे आप बता रहे हो ना, ऐसे ही हर किसी के पेरेंट्स, मैं खुद सोचता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा उतना जितना मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया। आई डोंट थिंक कि मैं उतना कर भी सकता हूँ, बिकॉज मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं है उतनी कि मैं 10 बार वो चीज़ सुन लूँ
और वो 20 बार 30 बार एक ही चीज को सुनना, मानना, I agree. You know what? I agree. I don't think I have that much patience because I have younger siblings and my youngest sister is 9 years younger than me. So I literally took care of her as a mother, like as a second mother. And I lost all my patience after that with kids. And if somebody comes over with their kid and they're crying, I'm like, please, इसको यहाँ room से बाहर लेके जाओ. सारा प्यार प्यार खत्म हो गया. I cannot handle that anymore. But I love my mom has like she rescued 2 stray dogs. Oh yes. So मैंने देखा भी you follow some. Yeah, I follow some organizations too. Yeah, they help. Then name उसका ये लिखा था मैंने एक. मैंने नाम नहीं लिखा लेकिन मैंने इतना लिखा था कि you Yeah, so my whole family were very much into. My mom's like a chairman for one of the societies वहीं पे area में. Okay. So if there's any abandoned puppies or dogs or injured dogs or cats or anything, they'll call my mom, they'll call my sister कि आओ take care of it. And like कोई भी like everybody knows like we're all so much in it. So जब भी कोई भी पैसे की ज़रूरत हो treatment के लिए या they need somebody to keep the dog for a few days until they find the dog a foster home. Like they send it our way. And my mom rescued like 7 dogs at once and they were all like near 10 face. Somebody poisoned them. Poisoned their mom. So the mom died and the kids drank the milk. So they were poisoned too. And they were puking everywhere all day and they were so sick. And I think 5 of them passed away and like 2 were left. And my mom still like one of them passed away later, but my mom still takes care of that one. Like it's in the hostel. हम monthly पैसे भेजते हैं, we visit them, and we still have 2 जो ऐसी सड़कों से like the dogs are beating up. एक dog हम उठा लाए, and the other one was like कि the mom died in a car crash or something. So those puppies were left and उसको उठा लाए घर पे. So we still have 2 dogs and I love them more than kids. Like उनको कोई कुछ ऊंचे आवाज में भी बोले I'd be like no, like काम खत्म, no, you cannot talk to my babies like that. तो कितने साल हो गए अभी उनको? I think 2 years. 2 years है ना? 2 years. तो वहाँ पे कनाडा में भी कुछ ऐसा है कुछ? अभी नहीं है. I babysat or the cat sat my friend's cat a few times, but वहाँ पे rules are a little strict and plus I work so much, so वहाँ पे चाहिए कि one person needs to be home all the time to take care of them because you cannot just abandon them. Like क्या फायदा dog लेने का if you're not home time and ही नहीं है तो exactly time ही नहीं है. So I want to make sure कि जब time होगा थोड़ा and I'll have a थोड़ा stable अपना घर, so I'll get dogs. और किस चीज़ पे ज़्यादा प्राउड होता है आपको अपने dogs and stuff पे? And I turned vegan a few years ago. हाँ वो भी था ये. Yes, are you vegan? मैं उस पे देख रहा था आपने पूरा एक उस पे स्टोरीज में वो हाईलाइट पे डाला हुआ है कि आज ये बनाया आज ये बनाया आज ये बनाया. So yeah, because I love cooking. I've been cooking since I was 9 years old. So I cook like more than 10 cuisines. So different every day. And वहाँ पे it's hard to find like good vegetarian vegan options. So I prefer cooking at home. तो vegan क्यों हुए? Same reason because animal cruelty and उससे पहले खाते थे? I never ate non-veg. I was always a vegetarian, so I left dairy and stuff, and I stopped buying products that were tested on animals or had any animal products in it. Like there's like so many makeup stuff that they test on animals, or their skincare stuff जो भी बहुत trend कर रहा है, like snail stuff कि वो skin के लिए अच्छा है. I don't use that. I cannot use it कि जो चीज़ certified vegan नहीं, I won't use it. I stopped buying leather. पुराना पड़ा है तो पड़ा है. I don't buy new one. But at the moment अभी इंडिया में I'm eating dairy because again it's hard to find even like options. But जहाँ मिलते हैं options, I prefer eating vegan. नहीं मिलते, I'm not very fussy about it. I eat it because I feel like the dairy industry here is still better than Canada. Because वहाँ पे I watched a few documentaries how they treat the cows and stuff. So ना एक वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती कि I didn't want to support that anymore. I cannot call myself an animal lover and support organizations or like things that go behind the curtains and stuff. So वो थोड़ा दिल में बैठ गया. होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए तो नहीं. Exactly. Like I cannot call myself an animal lover if I'm कि हाँ अच्छा मेरे dogs and I'm rescuing them and कि उनका सारा ट्रीटमेंट के लिए कर रही हूँ and then at the end I just go and eat like शाम को जाके हाँ मैं तो बटर चिकन खाना है. नहीं, I cannot do that. वो चीज़ें नहीं होनी. वो चीज़ें नहीं कर सकते. डबल फेस नहीं होना चाहिए. Exactly. तो मैं एक चीज़ और देखा था इंस्टाग्राम पे. सबसे पहले आपने मीम्स
स्टार्ट किए थे। हाँ जी, हाँ ना, आप मेरे पूरा इंस्टाग्राम मैंने पूरा देखा है, लेकिन मैंने एक एक स्टोरी एक एक उसका नीचे तक जाके, क्योंकि पता देखो एग्जैक्टली मजा तभी आता है जब पता हो आपके बारे में, है ना। तो वो मीम्स कुछ याद है, एक उसमें था शायद मम्मी ने कुछ कहा था, आप मम्मी बने हुए थे और आप ही। और मैं बहुत करती, आई यूज्ड टू डू दैट विद माय ब्रदर एंड आई थिंक देयर इज वन लाइक कि लाइक दिस आंटी कम्स एंड शी इज लाइक बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है ना, लाइक आंटी चलते चलते बहुत दूर चली गई मुझसे। राइट। तो ये कंटिन्यू क्यों नहीं किया? वो ही आई मूव टू कनाडा ना, तो वहाँ पे टाइम नहीं लगा, माय ब्रदर वाजंट देयर विद मी, तो वहाँ पे कोई इतना बिजी होगी लाइफ एंड आई डिडंट गेट टाइम। तो उसके बाद थोड़ा भूल वगैरह गई, बट अगेन लाइक दैट वाज बिफोर आई इवन थॉट दैट आई वांटेड टू कि इस फील्ड में जाना है। बट अगेन सी आई लव्ड मेकिंग कंटेंट एनीवे, तो वो हमेशा स्टार्टिंग आई वाज ऑन उस पे व्हाट वाज दैट लाइक टिकटॉक से पहले वो म्यूजिकली और वो राइट जिसमें dub smash, yeah. I used to make so many of them, and you know I think I always like growing up with siblings you kind of develop a sense of humor, and I was always like, you know, the class में होते ना, oh she's the pretty one, she's the popular one, and I was like yeah she's the funny one, so I was like always like the funny kid। तो कभी कोई पीजे मारा कोई गंदे वाला? बहुत। कोई है याद? है, बट अब जो सारे याद आ रहे हैं बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट there's like one I know, it's like what do you call an orphan taking a selfie, a family picture। अच्छा I know लाइक मेरे पास भी एक ऐसा कि वो मूवी देखी आपने, खोया खोया चांद? हाँ जी, वो सोहा अली खान की एक मूवी आई थी पुरानी, उसका स्पॉन्सर कौन है पता है? नहीं। सोचो। नहीं, खोया खोया चांद। खोया खोया चांद, हाँ, रामू हलवाई वाला। ओह मेरा बेटर था वही ऐसे गंदे वाले होने चाहिए जिंदगी में। तो दोस्त बोलते हैं, दोस्तों का क्या कहना है, अभी हैं इकट्ठे या कॉलेज वाले स्कूल वाले? नहीं, अब बहुत एक स्कूल वाले भी साथ में है, लाइक आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद सो मेनी पीपल, लाइक 20 साल से फ्रेंड्स हैं, एंड कॉलेज वाले भी साथ में है। आई एम एक्चुअली वो ऐसा तो नहीं बोलते कि हमें पता था कि सिमरन तुम कुछ करोगी? क्योंकि ऐसा बहुत होता है, बहुत देख आई फील लाइक एक दो लोग पहले तो बोल रहे थे नहीं, बाद में जब बन जाता है ना बंदा फिर कहता है हमें पता था। No, I have a couple best friends, उनमें से one of them's been together since school, so he's always like कि you know what, like because he was like topper class में and मैं पीछे से top में, पढ़ाई मेरे बस की नहीं थी, and then he's like कि जौन से लोग पढ़ाई में नहीं होते ना वो हमेशा उनकी artistic side होती है, that's why they never focus। I was always good in art, starting में भी I got so many prizes and awards and like painting and stuff, तो मेरी I think I won a contest कोटिंग महिंद्रा ने रखा था अराउंड चंडीगढ़, एंड मेरी न्यूज़पेपर में फोटो भी आई केम फर्स्ट। तो इन ट्राई सिटी या सो वो था, एंड देन आई पार्टिसिपेटेड इन सो मेनी स्टफ लाइक ऐसे ही बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, एंड यू नो आई थिंक आई डिड लाइक थोड़ा पोइट्री वाला भी था, सो आई वाज ऑलवेज गुड एट लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ कंपैरेटिवली, एंड इट्स नॉट लाइक कि हाँ पढ़ाई यू नो कि जैसे आई एम डम या कुछ। I was one of those people कि अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं अच्छी, I would not even put an effort into trying to learn it. Like, with math, like my math is good. Like अगर मेरे को जैसे you know normal लोग calculation कर रहे होते थे, people like जिनके बहुत math, they love math, and I'm like अच्छा दिमाग में हाँ करके इतनी क्या ऐसा होगा वैसा होगा, and मैथ में मेरे को इतना I had a hard time even like you know कि passing marks भी आ जाए बहुत है kind of stuff, but वही होता था कि then they would be like यार तेरी मैथ तो इतनी अच्छी है, why did you struggle like school में? क्या मैथ मेरी अच्छी है जो पैसे गिनने में? नहीं, पैसे गिनने में भी like different, जैसे because I work in real estate वहाँ पे ना, so I have to do like mortgage calculations and different things कि अच्छा commission कितनी बनेगी and stuff, तो वो I can do with formulas, ठीक है, वो उसमें दिमाग में चल जाता है, I don't have to do it on my phone, but with school वाली math it was so boring, मैंने पढ़ने की try ही नहीं की, वो होता ही नहीं है ना। हाँ कि जो चीज़ पसंद नहीं मैं ट्राई ही नहीं करूँगी पढ़ने में, सो एफर्ट टाइम क्यों वेस्ट करना जो चीज़ अच्छी नहीं है। मैंने भी इसलिए छोड़ दी थी। अच्छी बात है, कोई काम की नहीं है, कोई काम आ रहा है आपका सिम कॉस्ट है। मेरे पास जो डिग्री है वो काम नहीं आ रही, मेरे पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है। ओह या तो मेरे तो वो भी काम नहीं आ रही है। मेरे पास बिजनेस की डिग्री है, बट मेरा अगेन लाइक मैं रियल एस्टेट। लेकिन कितना मन है अभी उसको छोड़ के परमानेंट इस चीज़ में आने का?
काफी है मन बिकॉज मैं साथ साथ में आई एम स्टडिंग रियल एस्टेट तो अभी जाके आई एम गोना गिव माय एग्जाम एंड गेट माय लाइसेंस। ओह नाइस। सो उसके बाद फिर वो काले कपड़ों में फोटो लगानी है ना वहाँ पे। काले आई विल वेयर अ नाइस रेड और पिंक और कलरफुल सा ब्लेजर। नहीं मैंने देखा वो ज्यादातर मॉर्गेज वाले ना वो ओह या लाइक ऐसे करके यू नो दे विल पोस्ट फॉर द थिंग। नहीं या दैट्स लाइक my because for past 1 year I've been working in real estate and काफी like knowledge gain की है and with so I want to go back with real estate it's not like कि you have to do 9 to 5 तो वो है कि you can put in your hours like you have to put in hours ठीक है। modeling का भी same है acting का भी same है when project comes it comes otherwise you're free ठीक है कुछ है नहीं करने को। so it's like having those two options is like जब वहाँ पे मार्केट ज़्यादा है I can focus on that ठीक है। जब मॉडलिंग का या एक्टिंग का कुछ आया I can focus on that I don't have to worry about my full time job I don't have to worry about you know with this कि हाँ और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोनों चीजें आप कर सकते हो क्योंकि वो दोनों चीजों में आप किसी को आपको आंसरेबल नहीं हो एग्जैक्टली बिकॉज़ अपना काम है। I'm my own boss yeah। तो ये सोच कहाँ से आई सिमरन इतनी जल्दी? I have no idea। अभी तक तो बच्चों को ये नहीं समझ आती कि करना क्या है जिंदगी में तो मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करके छोड़ दी। इफ़ यू आस्क मी आई हैव अ सर्टिफिकेशन इन लैब टेक। 1 साल मैंने आई हैव प्रैक्टिस एट माय डैड्स क्लिनिक। मैं ड्रिप्स लगा सकती हूँ आई कैन गिव यू इंजेक्शंस आई कैन टेक सैंपल्स आई कैन रन टेस्ट्स सारा। पापा डॉक्टर थे? पापा डॉक्टर थे एंड आई कैन डू ऑल पट्टी। उसमें क्यों नहीं गए? ब्लड नहीं देख सकती आई कैन नॉट यू नो वो इंजेक्शन वगैरह अब तो वो भी टॉलरेंस था अब तो वो भी नहीं देखा जाता बिकॉज व्हेनेवर आई गेट माय ब्लड ड्रॉन आई एम लाइक ओके आई डू नॉट इवन वांट टू सी दैट लाइक द नीडल गोइंग इन द वेन बट वो कि आई ट्राइड दैट। उसके बाद आई टोल्ड यू आई ट्राइड फैशन डिजाइनिंग मैंने विद इन अ मंथ छोड़ दी। आई डिड फ्रेंच फॉर 2 years वो भी छोड़ दी बिकॉज आई वांटेड टू बी अ ट्रांसलेटर एंड मूव टू फ्रांस। बस you know like every year I had a new this is more लेकिन वो 2 महीने में कुछ तो आया होगा ना? Oh yeah I have a international certification so उसके लिए like it's like still very good for me to have that and I can still understand like I haven't practiced in like 8 years थोड़ा बहुत you know but I can still understand कि जो भी अगर थोड़ा बहुत लोग बोल रहे हैं but not like लेकिन कनाडा में I think फ्रेंच चलती है ज़्यादा। Yeah it's like the second language official language everything if you even buy a bottle of water पहले उस पे it would say in English then नीचे French में so everything has English and French on it regardless of what you buy every sign everything so it's like the second language so it was nice to know that second language। और वो भी अच्छी चीज़ है ना कि जितनी ज़्यादा लैंग्वेज है उतना मज़ा आता है ज़िंदगी में। That's true है ना? कितनी और आती है कोई और? Hindi, Punjabi, English, French। I tried learning Spanish when I was going to Mexico हफ्ता भर सीखी and as soon as I got there I forgot everything। नहीं ठीक है। वो ऐप से सीखी थी ना you know like हाँ वो आजकल बहुत सारी हैं मैं भी ट्राई करता हूँ लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलती। वो ही ना हफ्ता भर सीखी वहाँ पे जाके the moment I landed there the guy started speaking in Spanish and I'm like no Espanol only English। So you participate in Vancouver Fashion Week also, है ना? I did my internship there. Yes, okay. When I initially just got there, I think उसके 2-3 महीने बाद I did my internship there. तो कैसा experience था वो? It was a really good experience because at that time I didn't know, you know, I never took part in anything that was here कि ऐसा कुछ। At that time I took part in Vancouver Fashion Week because I worked with the designers। तब भी मेरे दिमाग में था I want to be a fashion designer, so that's why I took part there and वहाँ पे you know I was backstage mostly कि I was assisting the designer, I was assisting the photographers and then I was in the beginning जहाँ पे you know they give you जो wristbands to get in there and like checking everybody's IDs। So I think it went for a week and every day I had a different job so it was really fun because पहले 1-2 घंटे I had to do my job because उसकी certification मिलती थी and then after that I जब show start होता था I can just go there and enjoy the show so it was fun it was really fun it was a new experience for me I really liked it because it was very well given like there were so many people on the set it was very well managed even with like there were like probably 30-40 volunteers each day जो आते थे because every day there were different volunteers too right and
with them to have them, you know, organize each and every person. It was like I was really happy with like how the whole thing went smoothly. Okay, तो सिमरन मैंने एक चीज़ पूछनी थी, मैं भूल गया, पहले पूछना चाहता था. हाँ जी. आपका बर्थ 95 के बाद हुआ है? 95. तो मम्मा ने DDLJ तो नहीं देखी थी? देखी थी. उसी के बाद से नाम पड़ा है. उसी के बाद से पड़ा सिमरन. मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार ये सिमरन ऐसे तो नहीं आ सकता, मैं पूछूं जरूर कि 95 से बाद है या 95 में मेरे आई थिंक बर्थ के थोड़े महीने पहले DDLJ आई हुई, तो फिर तब से नाम सिमरन है ना. तो राज मिला कोई अभी तक? नहीं, राज नहीं मिला, टेवन मिला. अच्छा ठीक है. हाँ, ये पीजे था ना? नहीं. हाँ. नहीं, एक्चुअली क्या मिला? टेवन. अच्छा टेवन. हाँ. उसके साथ फोटो भी थी शायद. हाँ ना. He's little camera shy, so he doesn't get many pictures clicked. तो फिर जितनी भी जो over the year एक आधी जो फोटो मिल जाती है मैं डाल देती हूँ. Otherwise he despises camera and you know social media in general. I think उसका account पता नहीं कब का बना हुआ है. And he doesn't upload anything. He doesn't check his messages. उसको अगर memes भेजती because again I said memes, ठीक है, and he won't check his messages for a week and I'm like क्या मैं देखो Instagram पे meme यार मैं weekend पे एक ही बार check करूँगा जब time मिलेगा. He doesn't check his phone. वो अच्छी चीज़ भी है ना. Yeah, he's very away from social media. He doesn't like it. बहुत toxic है मेरे. बहुत toxic exactly. So he doesn't like it and he tells me the same thing. I'll wake up and you know I'll check my messages and social media पे भी जो आया होता है and then he'll get mad कि यार तो सुबह उठते ही you know you're on your phone constantly, you're checking, and he's like सुबह that's like negative energy you're taking in. And then I'm like, you know what, it makes sense, like this सुबह you're taking in that. तो कई बार होता है कि सिमरन मोबाइल छोड़ दिया है 2-4 दिन के लिए. I have. It's not very hard for me to leave my phone, honestly. Even like last night I went out with my mom. My phone was in charge. I left it at home for like 2-3 hours. It's fine. Like I can leave my phone when I want to leave it aside. I can leave it aside. ज़रूरी भी है थोड़ा सा. Yeah, my phone's always on DND. You called me this morning. You saw, right? Yeah. First call गई नहीं. It's always on DND because I have my work calls and stuff जो आनी होती है. I know what time they're gonna come. I usually have my phone available for that time. And if somebody wants to reach me, I usually tell them to text me. I'll get back to you 1-2 घंटे तक when I check my phone. So I try not to be on my phone constantly. तो थोड़ा I have put a timer on my social media. So कि इतना टाइम देखा, इतना टाइम वो. Yeah, so अभी तो यहाँ TikTok नहीं चल रहा, but TikTok, Instagram and Snapchat I have a timer combined no more than 2 hours a day. Nice. So अपने आप it locks me out जब 2 घंटे हो जाते हैं. But वो जरूरी भी है. Yeah, it's important. नहीं तो मैं तो पूरा दिन ही वहाँ पे फिर you know I'll keep watching reels. 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता. Exactly. And ये TikTok से ज़्यादा खराब हुआ ना, you know, like there's like so much funny stuff and they pick up on the algorithm. Yes. Like, okay, this person likes like funny stuff. Yes. Send her funny stuff. She likes recipes. Send her recipes. Yes. And you know what, like if somebody sends you one thing sometime and Instagram will keep like showing me that on my explore page. Yes. So it's very वो फिर मुश्किल हो जाता है इसको छोड़ना. तो वो hard है. तो हमने अभी एक आपने उसमें डाला था कि हैप्पी 4th बर्थडे मिरेकल कुछ कैप्शन थी. So that was a magazine my cousin started here. I don't know अगर अभी भी चल रही है. So I modeled for that. Okay. पहले for the first, I think the first and second issues जो आए थे models के magazine के, I did hair and makeup and थोड़ा you know I helped with the थोड़ा whatever went behind the scenes kind of stuff कि अच्छा you know setup कर दिया and mostly mainly hair and makeup किया. But after that, like I think second issue के बाद she asked me, "Acha, do you want to model for this?" And I'm like, "Yeah, sure, I will do that." And then I modeled for their magazine. I think that was maybe the 4th one. कि इसलिए it was the 4th one. और मेरे को पता क्या लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 29 फरवरी को बर्थडे आता हो कहीं. अभी तक 4 साल ही हुए हो कहीं क्योंकि वो अप्रैल लीप ईयर ना. Oh yeah, no. मैं उस चीज में था, मैंने कहा 4th कहीं वो लीप ईयर तो फिर you know what I should have told people like yeah I'm तो अभी क्या like 8 साल कम है मेरी. सही बात है. क्योंकि 4 साल में तो एक बार आता है. Exactly, 4 साल में एक बार आता है. सही बात है. तो तुम एक ना बात बता रही थी अपने नाना जी के बारे में, आई थिंक दादाजी के बारे में. Yeah. कि टेंट्रम्स कैसे वो
No, he just said like कि अगर if I go to a store and I have a blindfold on, I'll pick the most expensive stuff. तो ऐसा क्यों बोला उन्होंने? Because उन्होंने experience से बोला like every time he would take me somewhere I'd be like नहीं मेरे को तो like you know everybody like हाँ हम dairy milk खाएंगे हम munch खाएंगे this and I'm like no I want the Ferrero Rochers I want like this ये बाहर वाली chocolate I want like this so he just like knew कि अच्छा इसका expensive taste है and even with the fruits and stuff I love jamun I haven't had it in like 8-9 years but I love jamun and you know it only comes for the 1 month. Yes. And मैं जब भी यहाँ आती हूँ I usually come in winter time because I cannot handle the heat. And तो मेरे को जामुन नहीं मिलते and then he would wait कि रोज जाके ढूंढ के मेरे लिए जामुन लेके आने कि you know what like she's gonna go crazy इसने और कोई fruit नहीं खाना इसने जामुन ही खाना like picky eater like you know very specific on like what I want. और वो होना भी चाहिए मेरे को लगता है कि आपको ना पर्टिकुलर होना चाहिए कि मुझे ये जिंदगी में यही चाहिए इससे कम में तो सेटल होना ही नहीं. Exactly. बिकॉज तभी आप नहीं तो आप ना वो हो जाते हो कि ठीक है यार ये मिल गया ठीक है इसमें सेटल कर लेते हैं वो नहीं होना चाहिए. नहीं. तो पहला गाना कैसे मिला सिमरन? पहला गाना आई ऑनेस्टली मेरे को entirely I'm not sure I think the director of that song was added on my Instagram and हमारी पता नहीं कहाँ से बात start हुई and stuff like at that time I didn't have that in mind कि हाँ मैंने I want to do songs and stuff but I think he kind of gave me a push कि you should do it you know what you make vines and stuff जो मैं बना रही थी at that time and he's like maybe you should like try ये acting in this and like I told him I'm like yeah I have done theater like I used to do theater यहाँ पे Canada में I have performed and then he's like maybe you should give it a try and then I did and I think when I did my first shoot I'm like ooh ये तो बहुत ही मजा आया like you know what I can get used to this and I've been very much like I get bored easily just I told you like I started so many things and I left it कि अच्छा मन नहीं लग रहा left it but this is like one of the things that I have done for a while and I like it and I still want to do it and like अभी भी उतना craze है whenever the camera rolls like I still feel like it's my first day so it's like that you know ये कौन से साल की बात है जब पहला गाना? I think 2019 के एंड में था या 2020 में था. ओके तो कनाडा में या इंडिया में? कनाडा में था. यहाँ पे I didn't start anything. Okay. This is like the first time I'm shooting here. Okay. तो हुस्तिंदर वाला. Yeah. That's डॉलर वर्गी है. Yeah, that's my first shoot here. Like तो वो कैसे मिला? So that somebody reached out to me on Instagram and they were like कि there's a music video for you if you're interested and I told them like you know what weirdly I'm actually coming to India in a week and then they were like oh that's perfect because we were planning on like they were looking for location yeah but they were planning on like you know because the it says like Sariche espresso and stuff so I'm like okay you know sorry ye to raha and then they were like okay we're gonna shoot half of the song there and half of the song when you come here so there was a different team they coordinated everything they just told me the location and stuff कि आप वहाँ पहुँच जाओ and I just got there and they shot half of the song there and then यहाँ पे आई they coordinated and we shot rest of the song here. तो हुस्तिंदर का पता था कि अभी कुछ चल रहा है ऐसा इसका मतलब कि ये बहुत पॉपुलर हो रहा है यहाँ पे? मेरे को honestly I didn't know that because I'm very I know I work in the Punjabi industry but I'm still very new so I don't know a lot of people and मुझे like you know जो mainstream एक दो जैसे हर लोगों ने post किया होता है I'll know about them right. but मेरे को इतने even if you look at my phone I don't have many Punjabi songs like जो बहुत एक click करके right. and so when somebody like they told me Hastinder ka hai and stuff and I looked him up like you know what his songs are nice and because I felt like his songs are a little different than what everybody's doing now right. it's very simple कि ना you can understand right. कि simple है कोई ज़्यादा उसमें you know confusion नहीं है right. and he's not singing about like you know guns and stuff बहुत actual things meaningful गाने हैं and people can relate yes so जैसे वो गोल चौंकते exactly गोल चौंकते exactly and then like चंडीगढ़ वालों के yeah and then चंडीगढ़ वाले obviously they're like और उनको क्या ही पता है right there's like चंडीगढ़ वाले लोग they can understand that they can relate with that so वो मेरे को I really like even him like I met him he's very respectful very. Imagine like you know somebody who's a really talented famous singer and he's like constantly calling you ma'am and you know like giving you that respect on set it's very important वो बहुत जरूरी है मेरे को लगता है कई ये चीजें होनी ना हर इंसान में जरूरी है कि
आप अगले वाले को कंफर्टेबल करो. Exactly, and it was very nice to work with him. Like मेरे को लगता है कि मैं उससे मिला था अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले आई थिंक यहाँ पे आया था, तो बहुत ही सोबर है ना, आराम से बात करनी और बड़ा डाउन टू अर्थ, तो वो अच्छी चीज होती है. Very respectful, yeah. क्योंकि तभी आप स्टार बनते हो जितना आप हम्बल रहोगे. 100%. जितने आप हवा में उड़ोगे उतनी जल्दी आप. And you know what, like with people, like they see कि अच्छा हाँ इसने ये काम किया, they don't see the hard work that goes behind. Like you don't know his struggle कि कितने साल से he's been trying. इतने साल बाद एक गाना चला, like तो वो एक चीज है that people don't see. And you know, with him being that person, he understands that. And यार मेहनत करके नाम बनाने में पूरी जिंदगी चली जाती है, नाम खराब करने में 1 सेकंड काफी है. बिल्कुल. वो मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगर सक्सेस जल्दी मिल जाए तो आपकी ईगो बनती है 100%, और अगर आपको सक्सेस स्लो मिली है तो आप हम्बल रहते हो 100%. ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है. हम्बल रहना, भगवान से डरना चाहिए, और तो क्या है, लाइक देना. हाँ, कितना काफी, लाइक अगर बनाया तो उन्होंने बनाया, एंड लाइक he can take it away any time. Right. तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी? फ्यूचर प्लान्स तो अभी यही है कि to do, I kind of want to take myself out of the music videos, कि थोड़ा I want to limit them and I want to do more movies instead. ये चीज़ क्यों? क्योंकि ना मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया ये. पीछे भी एक था यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा था मैं, तो मैंने उनसे भी यही पूछा कि ऐसा क्यों है कि जो मॉडल ज़्यादा गाने कर लेती है उसको फिल्में नहीं मिलती. I feel like वो face value खत्म हो जाती है, because you are seen in every music video, everybody knows you. तो वो क्रेज खत्म हो जाता है कि to see you on a big screen, कि हाँ हमने तो एक्टिंग देख ली इतने म्यूजिक वीडियोस में, सैड भी कर ली, हैप्पी भी कर ली, you know, it's good to have that experience कि एक वो कैमरा शाय हट जाता है बंदा. But again, like at the end of the day, it's important because म्यूजिक वीडियोस अभी चलेंगी, पीपल विल रिमेंबर फॉर 6 months मैक्स, ठीक है, भूल जाएंगे. अभी करण औजले का गाना है, you'll remember, I'll remember. 6 months के बाद his new songs will come. People won't remember those songs, ठीक है, वो तब चले. सिमरन को नहीं याद रखेंगे, करण औजला फिर भी याद रखेंगे. Exactly. तो वो उसी चीज पे है कि with movies the sole focus is on you, and people will remember you with your name. And for me, because I have a theatre background, again I said like modeling is not that, like मेरे लिए I prefer acting over modeling. And in music videos you cannot show your skills कि आपकी acting skills कैसी हैं. बिल्कुल. वो मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें ना सिर्फ वो एक ना कि खाना पूर्ति करनी है कि मॉडल रखना है, that's it, और वो चीज बस. Because उसमें एक तो वो चीज भी है ना, you need to look pretty, you need to look fit. बिल्कुल. With movies you need to be a good actor, you need to be good with your expressions, and you know वो चीज मैटर करती है comparatively to how you look. ठीक है, looks है, but your talent matters. मेरे को लगता है फिल्मों में लुक्स बाद में देखी जाती है, पहले आपकी एक स्किल्स देखी जाती है. Exactly, like वो आपकी एक्टिंग स्किल्स देखेंगे, because they don't focus on your picture, right? Like music video में pictures है कि हाँ आ जाओ, like ये तो बहुत मॉडल्स आती हैं जो एक फिल्म करके दोबारा उनको कोई मूवी नहीं मिलती, because उनकी एक्टिंग ऐसी है. Exactly. And you know वो उस पे भी लग गया कि कुछ लोग तो मतलब चल जाते नहीं चले. बहुत ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में तो बहुत ऐसे लोग चल रहे हैं जो सिर्फ लक पे ही चल रहे हैं. सही बात है. और अपने लिंक्स पे चल रहे हैं बस. लिंक्स, अगेन लक, लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब कि वो उनको कोई अच्छा बॉलीवुड का डायरेक्टर या किसी से पूछो तो उनको कभी ना ले वो अपनी मूवी में. तो किसको फॉलो करते हो सबसे ज्यादा? किसी को फॉलो करते हो एक्टिंग में? एक्टिंग में आई थिंक आई ओनली फॉलो दिलजीत, आई जस्ट हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम. एंड एज सच इतना कोई है नहीं, बट अगेन लाइक आई लाइक वेरी थिक एक्टर्स जो इतने मेन स्ट्रीम नहीं है कि लाइक you know, I told you like I like Richa Chadda. उसकी like I watched फुकरे, तब से मेरे को I really like her a lot. And then I watched the Madam Prime Minister. हाँ आई थी. नहीं not that. कुछ CM करके थी. And you know her acting in that's really great. And she's a vegan, so एक ना वो थोड़ा होता है कि you just start respecting that person. Okay, she's a vegan, you know, she cares about animals. मसान भी अच्छी है उसकी. मसान भी बहुत अच्छी है, exactly. So there are like some actors I really like. I like Ayushmann Khurrana because I really like his movies, the type of movies he does. Taapsee Pannu does really good movies. And I
like, और कौन है, नसीरुद्दीन शाह है. I like his wife and कौन है वो, रत्ना पाठक. I don't know why, like every time she comes on the screen it's just like a smile on the face, right? Like वो थोड़े एक दो actors हैं, I don't know why I like them but I like them. कि अच्छे लगते हैं बहुत. तो कोई भी प्लान चल रहा है, अभी बात हुई कोई मूवी की या नहीं, अभी इन पाइपलाइन है? अभी तो कुछ नहीं, बिकॉज मेरा भी काम चल रहा है, सो आई कैन नॉट कमिट टू एनी लाइक लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट्स. पर अभी 2-3 वीक्स में आई हैव माई, अभी ऑनलाइन चल रहा है तो माई वर्क्स कैन बी डन. तो उसके बाद आई फोकस मोर ऑन लाइक डूइंग मोर फुल टाइम वर्क, बिकॉज अगेन लाइक there's been days where I go to the set and I have my laptop with me and I'm working while they're doing my hair and makeup, या बीच बीच में जैसी आई and I'm just like doing rest of my work. तो थोड़ा stressful हो जाता है. And if like I wanna do कि I have done a movie, अभी समर में रिलीज होएगी. Okay. So yesterday there's this magazine किद्दां करके, they shared a post about it, they tagged us. हाँ वो मैं पढ़ रहा था, लेकिन क्या नाम है मूवी का? Prince of Lahore. Prince of Lahore. यार ऐसा मेरे को लगा वो गाना है. नहीं it's a movie. It's a movie. Okay. It's coming in summer. It's been shot there in Vancouver, वहाँ पे पूरा. And बहुत miserable weather में we had a snowstorm. Okay. उसमें shoot हुई है. So हमें पता है कितना मुश्किल शूट किया, बट हमने किया. एंड शूटिंग उसकी भी मेरे आने से एक हफ्ते पहले ख़त्म हुई थी, बिकॉज द कास्ट वाज फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस. टोरंटो से द लीड सुखमन गिल वाज फ्रॉम देयर एंड द डायरेक्टर्स फ्रॉम टेक्सास. सो सारे जगह से लोग आए थे एंड वी वर डूइंग इट. तो वो कैसे हुआ? वो अगेन यू नो आई टोल्ड यू कि आई ओनली वर्क विद 2-3 लोग जो मतलब ट्रस्टवर्दी एंड दे गिव मी वर्क एंड I work with them. I don't even ask them questions. So one of those persons, Basant, and I've done so many music videos with him. And he asked me कि ऐसे ऐसे movie है, and I'm like, oh, I can audition. And he's like, नहीं, I've worked with you. I know you can act. I don't want your audition. आप बस आ जाना. You tell me you are available. आप आ जाओ. So he offered me the lead, and I'm like, यार मेरे से like I cannot take a month off work क्योंकि full time job चलती है. And I'm like कि जो थोड़ा बहुत होगा I can do. So he gave me a second lead का, and where I used to go after work, again after work और weekends. इसलिए I had busy weekends ना, because वही free मिलते थे. And after work I would go on the shoots and like मेरा weekends पे जाऊँगी and I'll do movie का shoot and I'll come back. तो वो करते करते it was done. It's editing now and it's all good. So I'm really excited for it. It's a very different kind of story. Like I don't think I have ever seen a story like that in Bollywood or Punjabi industry. It's a serious topic. हाँ? Serious topic है कोई? नहीं. It's not a serious topic, but it's a very different story. Okay. Comedy. So, comedy. Okay. It's like थोड़ा like drama and comedy. You could say like थोड़ा suspense भी है. अच्छा suspense भी है. Okay. तो Prince of Lahore के बाद क्या अभी चल रहा है? अभी तो I'm just like doing जैसे project आता है I'll do it, but I try to keep a few days free to कि rest वगैरह करने के लिए. And but I have done a few ads. ठीक है, 4 की है. So there's one I did for a friend's juice shop वहाँ पे टोरंटो में. And then I did one for like a meat shop, weirdly, kind of hypocritical of me, but it was again like a friend asked me to do it, right? And I'm like, yeah, like say no more, I'll be there. दोस्त को तो नहीं मना कर सकते ना भैया. I know, and I was like कि even if you know, for me that was my first ad, and I was like, for me, even if somebody is giving me that opportunity and you know putting their trust in me, because it was like, I think you've probably heard there's this Canadian TV channel यहाँ पे बेस्ट टेक के पास भी उनका I've seen Prime Asia. Yeah. So that was a production team. So it's a huge team, yeah. It's a huge team, and it was I didn't know that at that time. I was like, okay, my friend's asking me, I'll go. I'll do the ad, and it was with Bhangralisha. She's a famous influencer. So it was for a meat shop. It plays there. Like I didn't know it was gonna be a big ad. I've had people जिनके पास वहाँ पे cable है or something. They have sent me pictures and videos of like, we didn't notice it was you in the ad. You didn't tell me. You didn't tell us कि you're doing it. And I'm like, I didn't know it was such a big deal that it would play like 10 times a day on TV and different places you go. You go to Indian stores. वहाँ पे चलती रहती है. And their store itself, the brand I did it for, the meat shop, it's all across Canada. Okay. So उनकी even in my city they'll probably have like 10 shops. Okay. So उनकी shop पे भी चलती है, and you know it's obviously playing on the TV. So it was nice. And then I did one for there's Surrey में they have
a couple clinics. Okay. So it's for optometry, like चश्मों का brand के लिए I did. And उसके अंदर on their websites, like my pictures are all over. And again, even their video ad plays everywhere. कि TV वगैरह पे आती है. And now I did recently did an ad for Birla, the Sariya. Oh. यहाँ पे. Okay, nice. So it's editing now. अभी वो भी आएगी. So that's gonna play in PVR and Birla TV. TMT. Yeah, that's the ad. Yeah. So I did an ad for them. So वो अच्छी चीज होती है, उससे ना एक्चुअली आपकी आई बॉल्स बहुत दिखती हैं आपको, लोग बहुत देखना शुरू कर देते हैं. Exactly, and again, that's like it focuses more on acting comparatively, like compared to what you look like. So I prefer that. तो फिर मेरे को था कि it's like a good way for me to get my foot in the door, and I can be like कि you know music videos, a lot of people, if I go for acting stuff, जब तक movie नहीं आती, people are gonna be like acting वाला दिखाओ, because music videos में it's like posing. बिल्कुल. And so for me it would be like कि हाँ नहीं, I've done ads, because ads are not posing, you're acting. Yes. So वो like I'm kind of happy कि अब वो स्टार्ट कर दिया है. वो अब स्टार्ट कर दिया. और फोटोशूट कितने चल रहे हैं अभी? फोटोशूट यहाँ पे अभी इतना ही नहीं चल रहा है. I feel like it's still cold weirdly, it hasn't started yet, but चलते रहते हैं, you know, like if somebody asks, like I'll do it. It's fun because photoshoots are very quick. It compared to music videos पूरा दिन चलती है. It's like what, like 4-5 hours, yeah, you're done with hair and makeup, and it's nice. Like I enjoy that too, but I enjoy acting more. नहीं, एक्टिंग तो है ही है ना, वो तो एक फाइनल डेस्टिनेशन है कि वहाँ तो पहुँचना ही है ना. बिल्कुल. कि वो तो करनी है. तो कौन सी सीरीज चल रही है आजकल जो देख रहे हो? कोई है नेटफ्लिक्स पे? नेटफ्लिक्स पे I have this thing where I keep watching same shows over and over again. अच्छा. So How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine, and Jane the Virgin. I'm making my sister and my mom watch it because it's like the Hispanic telenovela, so it's very dramatic and very funny. So I'm just like, you know, you don't expect what's gonna happen the next second. It's like it has to be dramatic. So because I watched it like 10-20 times सारे ये shows, so I'm making them rewatch it, and I watch shows की जो मतलब बस चलते रहे, even in the background की जब तक मेरे पास पूरा free time नहीं होता ना, I don't like starting new shows. Right. But I give like जैसे How I Met Your Mother and Brooklyn Nine-Nine, and that's like I'll watch myself जब मेरे पास time है. With Jane the Virgin, that's like अभी main focus उस पे है, so I'll watch it with them कि 1-2 episodes a day. तो वो ऐसे चल रहा है. तो कभी उदास होते हो? होती हूँ, क्यों नहीं होती? क्यों? अगर like ऐसे डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है. I'll जैसे even if I watch something like, you know, sad सा, I'll stay sad for like good couple hours. And same with because I follow a lot of those pages ना जो animal shelter and these foster. So उसको देख के भी I feel bad. I try not to watch like लोग like my sister takes care of so many dogs. Like वो जाके, you know, there will be stray dogs की पूरी skin उतरी हुई है, blood's coming, चोट लगी है, कीड़े. She won't care, she won't wear gloves, दवाई लेकर जाएगी and she'll like do it with her hand and she'll take care of them. And मैं नहीं कर सकती because मेरे से चोट नहीं देखी जाती. And she'll tell me, she'll send me stuff like that कि यार उसके ऐसे हो गया पैर पे उसके, and I can मैं देखती नहीं. मैंने कहा नहीं, I'm not gonna open the video, delete कर अभी, मैं नहीं देखूंगी. मेरा गलती से हाथ बच गया, मेरे देखी मेरा I know mindset खराब हो जाएगा, स्ट्रेस होने लग जाता है कि मुझे लगता है वो पापा पे ज्यादा गई है ना. हाँ, वो उसका दिल पापा जैसा है. Oh yeah, like my dad and her, they used to sit in the last room, watch horror movies all night, and I am still one of those people. My mom would be like even last night, I'm like मेरे को पानी की bottle, because I cannot drink normal water, I have to drink Bisleri, right? तो मेरे को पानी की bottle ला दो कि वहाँ से kitchen से, and if I go in the kitchen, I'll grab the bottle, I'll turn off the light and I'll like sprint back to the room कि पीछे कोई भूत ना आ जाए. बस बहुत डर लगता है. कभी हुआ ऐसा वैसा एक्सपीरियंस? I feel like कि हाँ, like ऐसे एक्सपीरियंस किया है. कनाडा में कुछ हुआ है कुछ ऐसा कभी कुछ? नहीं, कनाडा में नहीं हुआ. नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो दिखाते हैं ना वो वाइट कपड़ों में भूत होते हैं वहाँ पे तो. वो तो हर जगह, भूत को पासपोर्ट थोड़ी ना, वीजा थोड़ी ना चाहिए. इंडिया में वो साड़ी में दिखती है और वहाँ पे वो वाइट कपड़ों में होती है. I know. मैं तो आई हैव सीन वीडियोस वहाँ पे दिल्ली कैंट वगैरह की, लोग कहते हैं ना like there is this one witch that follows you or just like, you know, runs with the same speed as your car. And then I'm just like कि कुछ, you know, like curiosity भी होती है, like how is that possible, like what's going on, but then डर भी लगता है. And then उसके बाद I think
even with the, I used to enjoy crime documentaries and ये सब, there was a point I got too much into it, but I watched Ted Bundy की back to back, उसकी documentary भी and the movie with Zac Efron. I watched that day, एक दिन में खत्म कर लिया, and couldn't sleep for a week. I kept imagining all those people he killed in my room. So I couldn't sleep. Like I remember middle of the night, मेरी ऐसे आँखें खुली and I saw somebody was standing there. There was nobody there, but you know my mind, yes. like subconsciously, yes. I was so scared, and that's when I decided I'm like I cannot watch stuff like that because मुझे डर लगता है later, and then I'll be like रात को पाठ कर रही हूँ मैं, आधी रात को बैठ के बाबा जी प्लीज नहीं आज नहीं, बस आज नहीं, आज आप आज बचा लेना, कल से नहीं देखूंगी, कल से नहीं देखूंगी बस। कोई weird experience हुआ है कभी, कोई जो बहुत याद आता हो? हाँ, एक बार सो फॉर रिमोटली वी एक्चुअली मूव टू ज़ीरकपुर ना, साल 1.5 साल के लिए, एंड I was a child and my mom, I told you my mom had a boutique, so she was working, my dad was working, I was in the kitchen and ना लाइट चली गई, and it was a weird thing, हमारे घर में हमेशा लाइट चल जाती थी, एंड ऑलरेडी वो दिमाग में बात पड़ गई कि यार हमारे में क्यों जाती है कि ज़्यादा, बट उसमें था कि अच्छा नहीं सब कुछ चल रहा है, बट आई वॉज इन द किचन और ना एकदम से क्या हुआ, गेट बाहर से लॉक था बिकॉज माई मॉम लॉक द गेट, एंड जो ऐसे बरांडा टाइप जो भी होता है, एंड आई एम मेकिंग मैगी, ठीक है, सिर्फ किचन की लाइट चल रही है, ड्राइंग रूम की बंद है, पीछे हॉल की बंद है, लास्ट रूम में सब बैठे हैं, माई ब्रदर इज सिटिंग देयर एंड माई सिस्टर सिटिंग देयर, ठीक है, आई एम मेकिंग मैगी, एकदम से मैं बाहर, लाइक आई थॉट समबडी इज वॉकिंग अराउंड, आई लुक्ड आउटसाइड एंड अ लेडी जस्ट लाइक शोड अप इन फ्रंट ऑफ माई फेस, and I still remember that, it still gives me goosebumps because वो डर बैठ गया, and I sprinted back to the room and I asked my brother to come, और उसने देखा, he's like nobody's there, like you're just like imagining things, तो फिर मेरे को थोड़ा तब like डर लगता है। तुम्हें लगता है कि वो कुछ था रियल में? I don't know, could be my imagination, it was dark and you know like I was alone, but could have been something कि that I still remember because it kind of like you know दिमाग में बैठ की बात, so वो तो एक चीज मजा आता है ना? नहीं, मजा नहीं आता, डर लगता है। लेकिन अब जब सारे भाई बहन इकट्ठे होते तो वो कहानी चलती है ना रात को बैठ के। नहीं, आई एम लाइक अगर इस बारे में बात करनी बाहर जाके बात करो, मेरे सामने नहीं करनी। आई इवन आई गो कैंपिंग देयर, राइट? तो समर टाइम में इट्स लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू गो कैंपिंग, फ्रेंड्स वगैरह, सो एवरीबॉडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट कि अच्छा चलो भूतों वाली बातें करें, हॉरर स्टोरीज, एंड आई एम जस्ट लाइक मैं हेडफोन्स लगा रही हूँ, आई एम गोना लिसन टू म्यूजिक, आप लोग बात करो, आई डोंट वांट टू लिसन टू इट बिकॉज आई नो आई एम गोना स्टार्ट इमेजिनिंग दोस थिंग्स, तो डर लगता है। सो आई जस्ट लाइक ट्राई टू यू नो स्टे अवे फ्रॉम कि अच्छा वो नेगेटिव एनर्जी दिमाग में डालनी ही क्यों है, विच विल बॉदर मी लेटर। तो लाइक आई हैव अ वेरी दिस अप्रोच कि अपना ना यू नो जस्ट टर्न योर बैक, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, if you don't think about it, it doesn't affect you. बिल्कुल बिल्कुल, वो ये ना कि सीक्रेट बुक में जो कहा गया है सीक्रेट में कि जो सोचोगे होगा वही। Exactly. So वही क्यों नेगेटिव सोचना? Exactly, नेगेटिव सोचना ही नहीं तो होगा ही नहीं, बस पॉजिटिव सोचो, अपना मस्त पैसे पाठ करो, ठीक है, अच्छा हैप्पी स्टफ देखो एंड स्टे हैप्पी। अच्छा, तो अभी खाने पे कितना कंट्रोल करना पड़ता है? बिकॉज बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो फिर ये I literally had क्या like 4-5 पूड़ियाँ with राजमा stuff for breakfast. Yeah. 4-5 पूड़ियाँ? Yeah. I had पूड़ियाँ for breakfast, उसके बाद चाय पी, had my biscuits and stuff. I don't focus on dieting any like. तो ये naturally है fit. Yeah. So हमें हवा भी लग जाती है। नहीं, I did gain like 10 kgs. I was 10 kgs heavier like 3-4 years ago. बट मेरा वेट लूज इसलिए हुआ आफ्टर आई स्विच टू वीगन डाइट, मेरा बहुत जल्दी वेट लूज हुआ। सो आई ट्राई लाइक आई ऑब्वियसली एंजॉय अ लॉट ऑफ गार्बेज फूड लाइक छोले भटूरे पूड़ियाँ, दिस इज लाइक माई फेवरेट स्टफ, नूडल्स एंड चिली पनीर एंड लाइक यू नो लाइक स्प्रिंग रोल्स हो गए, एंड आई एम अ वेरी लाइक आई लव द वुड फायर ओवन वाला पिज्जा एंड देन यहाँ पे आके ओवन फ्रेश हैज द बेस्ट पास्ता, तो वो तो खाना बनता ही है। सही बात है। So उसके करके थोड़ा like I eat, but every time I come to India I gain weight, I go there, I don't focus on my diet, वहाँ पे जाके vegan खाना, घर का खाना है, I lose weight। और काम इतना है ना कि वहाँ तो टाइम ही नहीं है ना। Exactly, वो I feel like इतना वैसी भाग हो जाता है, like I don't work out, तो जरूरत नहीं पड़ती। मम्मा है यहाँ पे तो मम्मा है, खाना खा रहे हैं, बस देख वही ना, खाना खाओ, अपना चिल करो, एंजॉय करो जिंदगी। तो राजमा चावल कितनी बार खा लिए? राजमा चावल I'm not a really big fan of, but बहुत बार खा लिए, like खा लिए 5-6 बार तो ऑलरेडी। क्योंकि वो हमारे यहाँ पे वो ट्रेडिशन है ना कि या तो घर पे कोई आया तो या तो राजमा
या पनीर या छोले? मटर पनीर ना? हाँ मटर पनीर। या आई हैड मटर पनीर लास्ट नाइट। ओके, तो अच्छी चीज़ है। और क्या खाया? 23 सेक्टर के गोलगप्पे वगैरह, चाट? नहीं वो भी नहीं खाया। आई ओनली हैड गोलगप्पे नियर माय हाउस। आई लव गुरु नानक के गोलगप्पे टू। ओके, तो उनके खाए एंड चाट वगैरह आई हैड इट। ओह देयर इज लाइक दिस आई हैड भरे हुए गोलगप्पे, द चाट वाले जो होते हैं। 11 फेस का गुरुद्वारा नहीं है, उसके अक्रॉस जो नेबरहुड पार्क के बाहर देयर इज दिस गाय, ही कम्स इन द इवनिंग, अमृतधारी गाय। थोड़ा टेम्पू सा उन्होंने लगाया हुआ है, बैक ऑफ द टेम्पू। ही ओनली सर्व्स लाइक 4 थिंग्स, भरे हुए गोलगप्पे, चाट पापड़ी, दही बल्ला एंड कुल्फी। दैट्स इट। And I tried his thing. It was like the most delicious भरे हुए गोलगप्पे ever. ऊपर वो अनार वगैरह डाल के? अनार नहीं डाला था। He put like so much मसाला and you know धनिया and प्याज वगैरह, because I think a lot of people don't put प्याज. So he asked me, he's like प्याज डालना? I'm like usually डालते. He's like नहीं usually नहीं डालते. I'm like डाल दो, but it tasted really good. His chutneys were very fresh. Dahi was very fresh. So you can just taste that, you know, कि fresh बना है and it tasted really good. तो वो अच्छा था। I'll probably go and you know याद करवा दिया। I'll probably go and eat that today. बट टाइम होने वाला है। हाँ बस शाम होने वाली है। हाँ खा लेंगे जाके। मम्मा आप वहीं चलना है। Oh yeah, my mom was with me ना, हम साथ में खाए। तो so she's like एक ही प्लेट लाई, एक और प्लेट ले। एक और लेके आ। Yeah because और उस दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। हम like नहीं आज इतना ही, कल आके फिर खाएंगे। ठीक है। तो थैंक यू सिमरन, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत मजा आया तुमसे बात करके। मुझे भी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसा लगा। नहीं मुझे भी आई एंजॉयड। क्या it didn't feel awkward, जैसे you know coming into the interview I was like oh shoot it's gonna be awkward, I'll have to watch what I say because I have no control over my tongue, but you made me feel very comfortable. It was very nice. Oh वो ये तो बहुत मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया। थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जल्दी आपकी फिल्में आए। हाँ जी, है ना, बॉलीवुड में, पंजाबी में, फिर हम दोबारा बैठे और बिल्कुल फिर हम मूवीज के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। एक्सपीरियंस के बात करें और क्योंकि वो अच्छा लगता है कि ना एक थ्रिल चलते रहना चाहिए लाइफ में। 100% और अच्छा काम करते रहना चाहिए। या एग्जैक्टली। अभी उम्र है, यू डोंट नो इफ देयर इज अ टुमारो, राइट? कल हो ना हो। सही बात है। आज एंजॉय कर लो। भूचाल आया था, मैं पांचवी मंजिल पे खड़ा था अभी। या जो भी लास्ट, तो उस दिन मैं सोचा था कि अगर ये बिल्डिंग गिर जाती तो मेरे कई सपने तो अधूरे रह जाते। एग्जैक्टली। एंड यू नो व्हाट, लाइक दैट्स व्हाट आई थिंक एवरी डे कि लाइक आई don't like, that's why I shop a lot. लोग कहते नहीं पैसे बचा ले, you know what, you can use that money to buy a house, and I'm like यार मैं आज enjoy करूँ, why should I worry about tomorrow? काम आएगा कल भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। क्या वो भी बचा रही हूँ? वो भी बचा रही हूँ। कहीं ये भी करने दो। हाँ वो अपने आप देखा जाएगा। सही बात। Yes. So thank you so much सिमरन। No worries, thank you.